Hello my dear friend. So today I am going to explain the next pattern. So now I have already written here, it is time plus 2 plus v1 plus other word. When I will talk in Hindi, on that times I can write what will become in Hindi sentences with the help of this pattern. Okay, so now यह किताब पढ़ने का समय है. ओके, यह किताब पढ़ने का समय है. दिस इज द हिंदी सेंटेंसेस. दिस इज द आइडेंटिफाई. ओके, यह और का समय है, ये सारे में रहेगा. चेंज क्या होगा? दिस वन चेंज हो जाएगा. इट मीन्स कि मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? चेंज हो जाएगा. तो हम क्या लिखेंगे? यह खेलने का, यह किताब पढ़ने का समय है, लिखेंगे it is time to read book. So first of all I have to write it is time to, then after v1 plus other word, it is time to, from here to there, it will become each and every sentences when I will write these kinds of the sentence. Yeah, when in my mind these kinds of the sentence come in my minds. Okay, so next one, it is time to read book. अगर हम कहें कि यह किताब पढ़ने का समय है तो हमें ऐसा बोलना होगा, इस तरीके से बोलेंगे. ओके, सो अगर हम देखें कि इट इज टाइम टू प्ले, अगर when I will talk it is time to play, it is time to play. Okay, hockey, football, any game you can write. It is time to play football. So now next I am giving you almost 3 example. It is time to learn. It is time to learn something. It is time to learn something. So this is the 3 example I have given. With the help of this and pattern we can write easily. But क्या रहेगा कि सबके अंदर में रहेगा यह, है ना, यह पढ़ने का समय रहेगा, तो यहाँ पे चेंज होगा यह, और का समय है ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का यह, और का समय है. सारे सेंटेंसेस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे हिंदी जब हम लिखेंगे. तो सिर्फ हमारा चेंज क्या होगा? एक्शन, और हमारा होगा मीन्स के ऑब्जेक्ट होगा. और यहाँ से लेके इट इज टाइम टू सब में हम लिख के रखेंगे इट इज टाइम टू. मेन वर्ड और अदर वर्ड जो रहेगा वो हम चेंज कर लेंगे. ओके, सो आई होप एंड यू अंडरस्टूड. सो now I am going to write next structure. So now second one, structure, it is no good. It is no good. Then after v4, after that object, after that other word. Okay, but in the other word what can I write? You will write, you can add now. Okay, इस तरीके से होगा. अगर हमें कहना है कि अब जो है कोशिश करना बेकार है, अब कोशिश करना, I am giving you one example in the Hindi. So which kinds of the sentences will become in the Hindi? So अब कोशिश करना बेकार है, अब कोशिश करना बेकार है. अंडरस्टूड? अब कोशिश करना बेकार है. अगर हम इसकी बात करें तो इट इज नो गुड, यहाँ तक सब में रहेगा.
Okay, it is no good. Now I will write कोशिश करना. Now I will write trying. Now I will write trying. Then after I will write now. It is no good trying now. It is no good trying now. So now next I am going to write it is no good. It is no good repenting now. We can write repenting now. It is no good repenting now. It means अब पछताना बेकार है. So for the second one I have also over. I have over now, but three example I am writing on the board. So second example is over. Third example I am going to write it is no. Then after what will I write? It is no good. Okay, so we can write it is no good. So then thinking now, you are calling, you can write calling a doctor now. Doctor now. But what is the main things? It is no good. Then after here is the something and change, action will be changed each and every sentences, but it is no good, and now each and every sentence it will be come. Only for the change your main verb, means V4 you have to use each and every sentences when in your mind these kinds of the sentence come in your Hindi. Okay, this kinds of sentence come in your mind as a Hindi. Okay, so third one example, this is the first one example, it was second example, and it was third example. So now I am going to next on structure. Next structure this. This is the way. Next structure. This is the way. This is the way. Then after two, then after V1, then after other word. Okay, we can write other word. इसका अगर हम हिंदी की बात करें, अगर मेरे दिमाग में बात आ रहा है कि यह खाने का तरीका है, अगर हम इसकी वन एग्जाम्पल हम हिंदी में लिख देते हैं कि यह खाने का तरीका है, या पढ़ने का तरीका है, या खाना खाने का तरीका है, जो भी अगर आपको लिखना है वो ऐसा लिखेंगे, यह खाना खाने का तरीका है, खाने का तरीका है. ओके, खाना खाने का तरीका है. अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा दिस इज द वे, दिस इज द वे टू ईट, द वे टू ईट फूड. सो दिस इज माय फर्स्ट एग्जाम्पल. अगर हमारे पास, अगर हमारे दिमाग में इस तरीके की बात अगर आती है कि यह खाना खाने का तरीका है, यह सोने का तरीका है, तो हम क्या लिखेंगे? यह सोने का तरीका है, दिस इज द वे टू स्लीप. या बहुत सारे सेंटेंसेस हैं आपके माइंड में जो आएगा, हिट करेगा. अगर मुझे ऐसा हिंदी अगर आता है इस तरीके का, इसी पैटर्न पे अगर टकराता है तो हम इसी तरीके की बात को कहेंगे. अगर हम लिखें नेक्स्ट को कि दिस is the way, this is the way to sleep. यह सोने का तरीका है. Okay, this is the way to sleep. Now third example, third sentence, this is the way, this is the way to, this is the way to go there.
Okay, suppose if you want to, you are standing in your queue as a prayer. On that times your teacher and order unto you go in your class. On that times you can say also, this is the way to go there, this is the way to go in your class. Okay, so many sentence and it will be these kinds of sentence and will become in your mind. With the help of this and pattern you can write, you can speak, you can ask. Okay, in which sentence you and find an helping verb, so you can make an interrogative sentences. Suppose that if you want to ask interrogative sentence question in interrogative and question, then you will write first. What will you write first? Is you will write first of all, is this the way to, is this the way to go there? Yeah, is this the way to sleep? Is this the way to write a letter? Is this the way to, okay, is this the way to means and go to market. अगर हम इंट्रो से अगर क्वेश्चन करना चाहें तो हम सिर्फ क्या करेंगे, इज को बाहर लाएंगे. आफ्टर दैट व्हाट विल यू राइट? इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट, देन आफ्टर दिस द वे टू V1 प्लस अदर वर्ड. ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. सो इफ यू आर न्यू on my channel, subscribe my channel and hit the bell icon. Keep practice and keep learning. Thank you.